Yes, good morning, students. In continuation of Java programming, today is our day 7, or it is also our day 3 practical class. So, in this today, we will understand three important concepts in three parts. The first is the first part is our built-in method. This is the part 1. Then we will see the user-defined method in Java under the part 2. And lastly, the array in Java, that is in the part 3. Likewise, one by one, I will make the three videos, the part 1, part 2 and part 3. Okay, so in this first part, I am explaining built-in method, that is the Java programming. Now very first we have to understand in built-in methods there are many popular category as we are understanding. The first is string methods, number methods, character method and arrays method. So these are the very popular methods and we have to use frequently methods from string, number and character. तो अब हम लोग स्ट्रिंग नंबर और कैरेक्टर के पॉपुलर मेथड को समझने की जरूरत करेंगे. तो we will understand this all into the three important terms. First is syntax, second is example, and third is your runtime program. Okay, now we will start one by one. So the first is the string method. Under the string method, let I have one method name as a compare to. So this method compare to always compare with the two inputs. So let the two inputs are there. So we will get result in three ways of this comparison. तो सबसे पहले मिलेगा अगर string 1, string 2 दोनों बराबर हैं तो output will be the your 0. If the string 1 greater than string 2, we should get answer as a positive. And third comparison, if the string 1 is lesser than string 2, then the answer is negative value. So like that, we will make this compare to methods. Also, we have one more similar method that is known as a equal method. So this method basically compare two string and give only true or false result, not like 0, positive and negative. Now we will see the one example that is based on this compare to. Assume we have string 1 4 capital A, string 2 4 capital, the string A is a small 4A and string 2 is a 4 capital A, string 3 is a 4 alphabet ABCD and fourth string is exactly to the string 1. Okay, so string 4 is same as string 1. Now we will run one by one and check whether what we will get. So here we will get like that. First is the string 1
compared to this, we will get a positive result. Why? Because in string 2 we have 4 capital A, and here we have a small cap alphabets. So this will be the your positive sign. So A actually has a ASCII value as a 65, and A, small a, come under the your 97. So let we have string 1 compared to this string 3. So here we will get some negative value. बट व्हेन यू कंपेयर, जब हम पहले स्ट्रिंग को फोर्थ स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे तो वी शुड गेट एग्जैक्ट 4 एंड एग्जैक्ट केस, दैट इज के स्मॉल ए. तो लाइकवाइज वी शुड गेट ए आउटपुट एज ए 0. Okay, now I will try to also run this program so that you will easily understand how this program is functioning. Okay, so I will copy this program as it is. I will copy here, and then I will run this program in this fashion. And very first we will run this welcome program to understand the technically, if there is no error then you will get a answer. ठीक है, सबसे पहले हमें एक वेलकम प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का रन करके देख लेना चाहिए. जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस. तो लेट वी विल से कि our compiler is running this program. Okay, now we will run our programs. हम अपने प्रोग्राम को अब रन करते हैं. Now in that we will write my program as a this, in which I have class as a main. Why? Because we are running main.java. So here we have two for 4 string. One is small a, capital A, B, C, D, and A, like that. So I will run this, and we should get our answer as a positive value, negative value, and 0. Okay. Now I am running this program, and see we are getting this value like a 32, like a -1, like a 0. So how we are getting this all? Because we are comparing character by character. If any character is different, then you should get a difference of that one only. Okay. So this is about your compare to. Now we will understand another method, say concatenate method. So in this method, actually two string, one is the val, second is the come, and these two string will concatenate. Okay, concatenate means append the concept. So how we can use the syntax? String 1 is equal to string 1 concatenate with the string 2. So string 1 has a val and string 2 has a com. तो whenever this function will execute, हमें क्या मिलना चाहिए string 1 में? जो कि पहले val था, अब मिलेगा हमें welcome. तो likewise, whenever we will get output of this string 1, we should get this welcome. Okay, now we will run this program and check out whether we will get or not. So I will copy this program, and then I will run in our compiler. Okay, so in front of you, you will see the result. If any error is there, immediately you can understand why. Then we will discuss more. Now see, we have this program in which main is there. Main के अंदर we have this method, main method. In this method we have a predefined method. This is your concatenate method. In this concatenate method, the two words will concatenate to each other. Now see,
how it is possible. So let run this program. So as soon as we will run this program, we will get welcome as a output. Okay. So here, as you can easily understand, the answer is welcome is coming on the our output screen. So so in this way, we can easily understand our all programs. Now one by one we will run. So wait for the another program. Now the another program is your character@. तो character@, क्या करेगा? Character@, basically this method will give the your character at that index. Let we have the one string, say A, B, C, D, E. Now A actually has 0 index, B 1, C 2, D 3, and E 4, and F 5 is there. Okay, so as soon as we will use this method in which character at 0, so we should get a answer as a. If we will change this one, we will get a your B. So likewise, we have a very simple program to get a indexed value. So we will see this program in the our compiler. So I will first copy and then I will paste in our compiler. Now see what we will get. So as soon as I will run this program, I will get a 0 at A and 1 at B. Now see, I will change this 0 to let 4, and this is the your 5. So in this time we should get what? We should get at 4, that is E, and at 5 we should get F. So this is the our prediction. Now check, after run we should also get this E and F. Likewise, we can make a simplest program based on the our this method. Okay. Now come to the two uppercase. So two uppercase, basically upper the your case, alphabet case. So what will be happen? Let very first I will change this input by this simple alphabet A, B, C, D, E, F. So this is there. Now let you have to get the output A, B, C, D, E, F. Okay. So here we are using one simple function, name is to uppercase. Okay. So this to uppercase basically update this input to your in this uppercase. So if the value will like that, here A is capital and we are getting a capital, but whenever the lower character are there, we will get accordingly in the upper case. If we have a numeric, so what will happen? In this numeric, we will get a 70s output. Let we have a 45 in between this string. So we should also get here 45 here, no change. If we have some special character, say at the rate, here we also get this at the rate character. Okay. Now we will see this program in our compiler. So we will copy and then paste. So after this we are getting this or not, we will check very first. This basically double quote and single quote is many times changing to the our different symbol. So always try to make it this true symbol so that there will be no error. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, we will use this upper case. तो मैंने suppose सबसे पहले लिया small a, तो small a b c d e f, then you run this program. इसको run करके देखते हैं.
तो वी शुड गेट ए कैपिटल ABCDEF, ठीक है। और as we will get this output, it means this program is actually, why this taking time sometime, because this is the internet based on the your this compiler is based on the internet, that's why we will get a sometime delay in the this output, okay। Now however we will get ABCDEF, हमें ये मिलेगा। अब देखिए मैं इसके अंदर में न्यूमरिक डाल देता हूँ, से 789, तो what you will get, we will get the same or some different. We will get a same like a your other alphabets, but 789 as it is. Now I will change with the some your special characters, say at the rate, hash, dollar. So we should get nothing change in that special, only the changes that we are observing in the alphabets. Alphabets में ही जो changes हैं वो changes आपको दिख रहे हैं, ओके। नाउ कम टू दी योर ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा? ट्रिम बेसिकली ट्रिमिंग द स्पेसेस, जो स्पेस आपको फर्स्ट और एंड में रहते हैं उसको ट्रिम कर देगा। तो लेट आई हैव दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसमें देखिए मैंने कलर से स्पेस बनाया है। तो एज वी विल रन दिस प्रोग्राम वी विल गेट ए ट्रिम string. Without this space you will get a this concept. So let we will see this program on the our compiler, एक करके रन करके देखते हैं कि what we will get। तो let I have this space, यहाँ पर मेरे पास space है। तो as soon as I will run this program, what will happen? We will use actually string without space. So what actually function we are using here, that is known as a trim। trim हम use कर रहे हैं, ठीक है। तो by trim, because in another languages the R trim is there, left trim is there, है ना। R means right trimming, L means left trimming, both trim। तो but here we have a trim is there, so by trim we can actually suppress this all blank space। Now see this result, we will get what? We will get the all blank space removed and then we are getting this one। तो here actually I am showing by this, देखिए यहाँ पर मैं आपको show कर रहा हूँ। तो here we are getting some space in the first your input and then we are getting no space in this one, ठीक है ना। Now see, let I am giving the more space like a tab, टैब मार रहा हूं मैं, देखिए टैब दिया मैंने आपको, फिर टैब दिया, फिर टैब दिया, स्पेस बार दिया। नाउ सी द आउटपुट। तो in output we will not get any such type of the this space, but in the input is there। तो input में देखिए दिख रहा है लेकिन output में कोई भी space नहीं दिख रहा है। तो in this way we can get a very good concept of this your method, okay। Now come to the substring। तो substring क्या करेगा? The substring basically give the your substring from the main string। Let I have main string welcome to Java programming testing। So here we are getting a welcome to Java programming testing, but let I want after this 12 what are there at after 12 we have a Java programming testing only। After 17 we have this programming testing only। Let we can make a range from 12 to 20, है ना, 12 से 20 तक चाहिए आपको। तो here we will get a output like a Java Pro। तो in this way we can easily get our output। Now 9 to 11। तो in 9 to 11 we have only 2, ठीक है ना, this 2 is there। तो this 2 is from 9 to 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, from 9 to your 11। तो this is from starting is the 0, 0 से start करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 is T, then 10 is there। तो 11, before 11 you have to execute this output, okay।
So let in the your screen we will also check this program by changing some input, and we will see whether we will get this output or not. Let I have this program. Now in this program, now I am changing this concept. So I should get very first whatever the waiver prediction. है ना? Now you can change, say let I have the output 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ठीक है? Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Okay, now see after 12 क्या होगा चेक करना है आपको कि whether you will get what. तो after 12 we should get this. तो this is up to 9 is there. 9 11 12. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए. अब देखते हैं, रुकिए. नाउ यू रन दिस प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो यू विल गेट व्हाट है ना आफ्टर 12. तो दैट यू शुड बी अंडरस्टैंड. नाउ सी, तो मुझे 12 चाहिए था, तो देखिए एग्जैक्टली वो वहीं से ही मिल रहा है. ठीक है, तो नाउ सी दिस इज द यूर 12. ये आपको 12 चाहिए था, एंड फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग 2 टू दिस ऑल नंबर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पूरा का पूरा एज इट इज स्ट्रिंग बाहर मिल रहा है. Now similarly 17. 17 means we have a 12 here, then 17 is here. तो from 7 यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा का पूरा मिल रहा है. तो this is the your actually understanding कि how this program is running. Now 12 to 20 is there. तो 12 to 20 means up to your 20 is here. तो ये कहाँ तक मिलना चाहिए? 9 तक मिलना चाहिए. ठीक है ना? तो ये कितना है आपका? 20 है. तो यू शुड गेट बिफोर दिस 0. तो यू शुड गेट 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये आपको मिल रहा है. तो this is the your result of that. Now 9 to 11. 9 to 11 is only your 9. 9 is there. ठीक है, तो 9 आपका यहाँ पर है, तो ये 9 to 11 चल रहा है. 9 to 11, तो we should get only 9 and 10. ठीक है, 2 मिलेगा आपको 9 0. तो here we are getting a output as a 9 0. Okay, so similarly we are getting very similar output. It means our thought is correct. Okay, now come to the and with. And with क्या करेगा भाई? And with function आपको ये बताएगा कि आपके इनपुट में से welcome to Java testing is there. In this welcome to Java testing we are ending with Java testing, yes or no. तो you should get a answer true. क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर Java testing से हम end कर रहे हैं. Now testing से भी end कर रहे हैं, तो you have another output. Yes, I am ending this string with this one. I should get output as true. Now we also answering whether you are ending with this Java. No, we are not ending with this Java because testing is ending. So if Java ending, the answer is false. So this is the very good actually theory, and you can use this program in the any program like that. है ना? आप पूछ सकते हैं, जैसे आपका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी में आप पूछ सकते हैं कि ये किससे आपका बंद हो रहा है. मोस्टली द सम आर द कॉम इज देयर, इन इज देयर, तो आप उसको वहां पर अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं. Okay, now we will check in our compiler so that we can get the real output or not. So here we will get Java testing. Yes, I am getting the answer. One is the true, second is true, and lastly false, because this welcome to Java testing is not ending with this Java. Okay, now come to the another program. This will be written to the length of string. तो भाई length of string बहुत जगह हमको use होती है. तो let I have string Java programming. Let another string, one is the only programming. So here we will understand कि what you will get the this length function or method. तो string 1
of this length is a 16. The string 2 is a length with 11. So like that we should get a output of any string with the length. तो हमें लेंथ पता करनी रहती है, तो लेंथ हम इसी से पता करते हैं और we will understand कि whether our input is correct with length or not. ठीक है, तो इस तरीके से आप हम सब चीजों को समझ सकते हैं. Now let I will run this first program. तो I should get 16 and 11. तो मुझे यहाँ 16 11 मिला. अब देखता हूं मैं exactly 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 है. ठीक है, तो पहला 9 है और दूसरा वाला भी अपन क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 है. तो फर्स्ट आई शुड गेट, मेरे को यहाँ 0 से 9 यानी 10 मिलना चाहिए. पहले वाले में 10 मिलेगा और दूसरे वाले में 0 1 2 3 4 5, इट यू शुड गेट 6. तो 5 प्लस 0 दैट इज 6. 9 प्लस 0 है ना, दिस इज द 9 प्लस 0, तो यू विल गेट 10. तो अब देखते हैं इसको रन करके, तो यहाँ पे आपको 10 और 5 मिलेगा. यस, 10 एंड 6 वी आर गेटिंग. तो 5, अच्छा 5 प्लस 1 मैंने बोला लेकिन लिखा ही नहीं. तो 10 प्लस 1 5 प्लस 1 दैट इज द 6. So you should get a 6. Okay, तो likewise whatever you are understanding same you should see. देखिए प्रोग्रामिंग में एक बार याद रखिए, कितना भी कहीं से पढ़ लीजिए, उसको जब तक खुद करके नहीं देखेंगे तब तक उसको सही नहीं मानना. यानी कान से सुनो, दिमाग से सोचो, लेकिन आप उसे रिजल्ट एग्जीक्यूट करके देखो. ये आज का टिप है आपके लिए, आप इसको समझदारी से करिए, देन यू विल गेट ए मोर कॉन्फिडेंस. ओके, नाउ कम टू दी योर जावा नंबर मेथड. तो जावा नंबर मेथड्स को अब हम देखते हैं. तो इन विच वी हैव एब्सोल्यूट मेथड, राउंड मेथड, देन मीन मेथड, देन मैक्स मेथड, देन रैंडम मेथड. ये बहुत यूजफुल है मेरे लिए. जब मैं क्वेश्चन आंसर बनाता हूं तो आई एम आल्सो यूजिंग दिस रैंडम फंक्शन सो दैट आई कैन चेंज माय सीक्वेंस टू द ऑल स्टूडेंट. नाउ एब्सोल्यूट इज द एक्चुअली रिटर्न द योर absolute value. Then round function, so round method is rounding the nearest integer method. ठीक है, now we have a mean between the two number, minimum निकालने के लिए, and max actually to get a your maximum number. Round means rounding this, random means generate the new number every time, unique है ना. आपको हर बार यूनिक नंबर मिलेगा भाई, यहाँ पे याद रखेंगे है ना, you will get a unique number. Now we will see this all by one. Now see, now we have a absolute. तो absolute क्या करता है, देखिए absolute आपको क्या करेगा, directly we will understand this is a your positive number, so we are getting a positive number. Now here we have a negative number, तो यहाँ पे हमें negative number मिल रहा है. ठीक है, so this is the your actually understanding कि how this absolute method is working. तो चलिए अपन पहले थ्योरी देख ले, फिर एक साथ सब रन करके देखते हैं. ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट, व्हाट your, अब हमारे पास क्या है, राउंड मेथड इज देयर. तो राउंड मेथड देखिए क्या कर रहा है. राउंड मेथड वेरी फर्स्ट वी हैव दिस नंबर 12.234, तो 12.324 राउंड कर रहा है. ठीक है, तो ये राउंड में 12 होगा, 13 नहीं होगा. यहाँ पर 7 है इसलिए ये यहाँ पर 13 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये 5 के और ऊपर है, तो ये जब 5 रहेगा तो भी ये 13 देगा. तो 5 से आपके 9 तक ये एक और प्लस कर देगा, लेकिन 0 से 4 तक आपको ये बैक वाला ही नंबर देगा. ठीक है, तो दिस इज द योर थ्योरी इन विच वी आर इजली अंडरस्टैंड राउंड मीन्स व्हाट. राउंड का मतलब आपको समझ में आ गया. नाउ कम टू द मीन. मीन क्या करेगा भाई, देखो मीन मतलब दो नंबर के बीच का आपको मिनिमम निकाल के देगा. लेट आई हैव 10 and 20, तो 10 and 20 क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 and 20 को इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये मैथ
आपके फाइल का है, ये इंपोर्ट हमने फाइल कौन सी की है, मैथ की है ना, तो मैथ में से आपको ये मीन निकाल के दे रहा है। तो यू कैन यूज एनी वेरिएबल विद द वैल्यू, और डायरेक्टली यू कैन यूज एनी कांस्टेंट, और यू कैन यूज फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर को भी आप यूज कर सकते हैं। लेट आई हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर यू, मैंने आपके लिए बनाया। देखिए मीन के अंदर मीन यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहला फंक्शन आपको क्या निकाल के देगा, 1 निकालेगा, फिर 3 को 1 से कंपेयर करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो लाइकवाइज वी हैव दिस मीन कंसेप्ट। ठीक है, मीन हो गया, मैक्स भी ऐसे ही रहेगा भाई। अब हमको क्या करना है, अब देखते हैं दूसरा रैंडम। तो रैंडम क्या करेगा, इट विल जनरेट द न्यू नंबर। भाई मैं ये आपको जनरेट करा के दिखाता हूँ, तो यू विल गेट ए एक्चुअली एग्जैक्टली द आउटपुट। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ सी द आंसर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। तो लेट आई हैव दिस नंबर, तो मैंने इसको पहले रन किया, तो आई एम गेटिंग ए 1 वैल्यू, तो मेरे को एक वैल्यू मिली यहाँ पे। चलो ठीक है, इस वैल्यू को मैं नोट डाउन कर देता हूँ आपके सामने, है ना, इसको मैं नोट करके रख लेता हूँ। लेट आई हैव दिस नंबर, ये नंबर हमको मिला है, तो इसको यहाँ नोट डाउन कर दो। ठीक है, लेट दिस इज ए फर्स्ट टाइम, ये मैंने फर्स्ट टाइम रन किया तो मुझे इस टाइप का मिला है। तो अब देखिए एक बार और रन करता हूं मैं। नाउ व्हेन वी विल रन अनदर टाइम, तो वी शुड गेट ए सम अनदर नंबर। देखिए कोई दूसरा नंबर मिलेगा आपको। आप कितने बार भी इसको रन करके देख लीजिए, यू विल गेट ए डिफरेंट नंबर, हर बार ये अलग नंबर देगा ये। तो इट इज नोन एज ए यूर यूनिक रैंडम नंबर। तो बहुत अच्छी बात है कि दिस विल बी द वेरी यूजफुल प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोई भी इस तरीके के नंबर को निकाल सकते हैं। तो दिस इज द यूर प्रोग्राम ऑफ व्हाट, ये रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर के बाद मीन नंबर कैसे निकालेंगे भाई, मीन नंबर के लिए यू हैव टू डू व्हाट, अब क्या करना है आपको, मीन मीन निकालना है। इन मीन यू हैव टू राइट लेट 10 एंड 20, दो नंबर है आपके पास, तो यू शुड गेट ए 1 मीन नंबर, तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। नाउ लेट आई हैव मैक्स, अब इसी को मैक्स कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो देखते हैं मैक्स नंबर यहाँ पर आपको देगा 20 आंसर, तो यू शुड गेट इट 20। तो लाइकवाइज यू कैन मेक ए प्रोग्राम। नाउ से एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, देखिए एब्सोल्यूट आई हैव 1 आर्गुमेंट से माइनस 1 2 3 4 5। तो अब देखिए मेरे को कितना मिलना चाहिए आंसर एब्सोल्यूट का, यू शुड गेट ए पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यस। Now I have round function. So in this round, I will do what? Rounding my float. है ना, float input रहेगा यहाँ पे. Say 1.0. I should get what? 1 or 2. I should get a 1. 1 मेरे को मिलना चाहिए. 1 मिला मेरे को. Let I have 1.1. तो 1.1 में भी 1 मिलेगा. ठीक है. Now 1.2. 1.2 में भी 1 मिलेगा. तो इन दिस वे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द आउटपुट, है ना, और कोई तरीका हमको प्रैक्टिकल करने का नहीं है, ये एक तरीका है। तो 1.3 1, ठीक है, 1.4 यू विल गेट आल्सो 1, ठीक है। नाउ 1 पॉइंट दैट इज द 5, अब 5 करके देखते हैं। तो 5 में देखिए यू शुड गेट इट 2, हमें 2 मिलना चाहिए, ठीक है, तो यू शुड गेट इट 2। नाउ 1 पॉइंट टिल 9, तो 9 तक कर लेते हैं। तो 9 तक आपको क्या मिलेगा, that will be 2, answer the 2 is there, okay। तो in this way we are easily understand this our concept, okay। now come to the your java character method। अब देखिए जावा करेक्टर मेथड में आपको क्या मिलना चाहिए, यू शुड गेट ए इज लेटर। भाई आपको देखना है ना इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट में अगर आपका लेटर है कि नहीं है वो चेक करेंगे। डिजिट, इज डिजिट आपने इनपुट किया क्या डिजिट, वो चेक करेंगे। सब में देखिए एक ही चीज लिखा है, इज मतलब क्वेश्चन हो रहा है, ये आस्किंग द क्वेश्चन, क्या आपने इनपुट किया है लेटर, क्या आपने इनपुट किया है डिजिट, क्या आपने इनपुट किया है लोअर केस, लाइक दैट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल, है ना, एक एक करके अपन देख लेते हैं इसको। नाउ लेट आई हैव ए दिस आंसर, तो यहाँ पर मैंने इस लेटर करके दिया है, तो इस आंसर को पहले अपन कॉपी करते हैं
और प्रैक्टिकली देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो लेट आई हैव दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैं इसे रन करके देखता हूँ। नाउ एज आई विल रन दिस प्रोग्राम, तो इज लेटर का कंसेप्ट है यहाँ। तो इस लेटर में ए क्या है, कैपिटल ए, तो भैया ट्रू मिलना चाहिए। फिर आपका क्या है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि आपका जो बी है वो न्यूमरिक है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। तो लाइक दैट कंसेप्ट इज देयर इस लेटर। अब इस लेटर को मैं बदल देता हूँ, इज डिजिट कर देते हैं। ठीक है ना, अब इस डिजिट कर देंगे तो शायद ये सही हो जाएगा। तो यू शुड गेट ए व्हाट, यू शुड गेट ए ट्रू। ट्रू क्यों ट्रू मिला भाई, क्योंकि आपका यहाँ पर जो इस लेटर की जगह क्या हो गया, इज डिजिट हो गया, है ना, इज डिजिट हो गया। नाउ इज अपर केस, तो अब अपर केस के लिए क्या करना है आपको, देखते हैं, अब अपर केस करके देखते हैं। लेट आई हैव टू अंडरस्टैंड जेड। अब जेड मेरा अपर केस है कि नहीं है, तो अपर केस तो है, तो आई शुड गेट ए व्हाट, माई द ट्रू, ट्रू ट्रू मिलेगा। नाउ लेट आई विल अंडरस्टैंड द लोअर केस। अब लोअर केस को भी कर लेते हैं बस एक और, तो लेट आई हैव ए लोअर केस, दिस इज द लोअर केस। तो अब लोअर केस में इसको दे देते हैं लेट स्मॉल जेड, स्मॉल जेड। ठीक है, तो लास्ट वाला तो कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूं मैं अभी। नाउ सी द रन, रन द प्रोग्राम, यू शुड गेट ए ऑल ट्रू, सब ट्रू मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सारे के सारे हमको इज लेटर ट्रू, इज डिजिट ट्रू, इज अपर केस ट्रू, इज लोअर केस ट्रू, सब ट्रू, सबको हमने सही कर दिया। ओके, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द वन बाय वन, देयर आर मेनी मेथड मोर। अब पूरा बताने के लिए बहुत समय लगेगा, आप इसी तरह मोटिवेट हो जाइए और अपने आप से और ढूंढ के कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज हम लोग ये पहला पार्ट में यहीं बंद कर रहा हूं, देन आई विल स्टार्ट द अनदर पार्ट। ओके, नाउ थैंक यू टू ऑल।